place. We're not, so last two games, we're not even talking about the game. We're talking about What management. game? Like, we're not talking about the What game. Exactly. See, What do you want to talk about? The last 5 games. I'll tell you the last 5 games that we've shit the bed. Okay, the one game that we won against the mighty Newcastle yeah, 1-0, wherein we changed our formation as per the great managers Jason Wilcox and our head coach Ruben Amorim. After that, we drew to Wolves. 3 weeks पहले हमने Wolves को 4-1 खोला था. 3 weeks पहले. 9th of देख December we played against Wolves. We कॉन्फिडेंस defeated बढ़ाना them था ना. 4-1. Yeah. 1-1. Then we drew to Leeds 1-1. Then we drew to Burnley 2-2. And then we losing to then we've lost to Brighton 2-1 out of FA Cup. So what do you want me to talk about the game? Yes, the only bright thing I'll tell you is Benjamin Sesko getting Right. 3 goals in 2 games. But he Not a missed bright a, thing. he missed as well. That's okay. पहले वो सिर्फ मिस कर रहा था. अब कम से कम स्कोर कर रहा है. Okay, So I'll you take need to that. take some positive. I'll take that. That's actually right. But then our defense is so open. Our wings are so open. I don't even know where to start or how to even go from there. कि like इधर से आराम से आ रहे हैं. Like you know how we attack, right? Like even yesterday, we attacked with this thing. We're not finishing. They Yeah. ऐसे क्यों होता है कि opposite team like जो भी होता है उनको सिर्फ एक या दो chances चाहिए. That's it. उनको पता है, हमें भी पता है. मुझे लगता है यूनाइटेड प्लेयर्स को भी पता है कि they'll score. They just need that one or two chance, like maybe, I don't know, maybe good or maybe bad, but they just score somehow. And some like कल वेलबैक का गोल देखा, बेंचो. बस sexy बोलता है. मैं वही बोल I'll रहा tell हूँ. you. Two things. Now, from a neutral perspective, do and think. You are not a Man United fan, which we would not be probably in the next 2-3 years. Wrexham support करेंगे. But suppose you're not a United fan. Now you're a neutral. How do you think तेरे team में would you want a midfield of Bruno Fernandes, Cunha, and Mason Mount to start? Yes or no? प्यार से, right? You'd be अरे, like, fuck. मेरे को अगर ये midfield मिल गया, मैं मचा दूंगा. बट मैं तेरे को वही तो Imagine. बोल रहा हूँ कि these I'm exactly तेरा coming हाँ. to the point. But the problem is the modern day football right now is completely go wide, inverse in, center से push, अंदर ball डालो. Right? The major problem is हमारे left or right wing backs, flanks, whatever you would like to call, पीछे are the shittiest. Diego Dalo is horrible, and that Patrick Dorgu. No, he's It not doesn't. United. He's not United. He's not English Premier League material. One thing that United needs to change apparently now in the recruitment is when you do your medical and everything good, फुटबॉलिंग आईक्यू भी चेक करो भाई. 80 के ऊपर है तो ही प्लेयर लो, नहीं तो 80 मत के लो. वो भी कम है. 80 के भाई 80 का मैं कम बोल फुटबॉल. रहा हूँ भाई. 72 तो मिनिमम होती है. 72 के नीचे वाले बच्चे को मत बोलते थोड़ा सा. से So तो I am हम not even. 200 150 200 मिल रहा है और तो 80 का बेंचमार्क रख रहा है. वो भी नहीं है एक्चुअली. लेकिन मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ, ये सब these players are not bad. You mentioned Cunha, who comes from Wolves, who are a shit All are bottom players. team. He scored 15 goals there. You've got Bruno Fernandes. You've got यहाँ पे चल अभी Mbeumo, he's been missed, but we lost with him as well. We were drawing with him as well. That's the thing, right? तो हमने ये फिक्स कर दिया, चल हो रहा है, ये हो रहा है, बट आवर प्रॉब्लम अगेन कम्स बैक टू दैट, राइट? Like I think in the next 2-3 games we will have to start talking about Lemons as well. I know he's not at fault, but like I'm expecting something magical from him as well. क्योंकि I know defense is a problem right now, midfield is a problem. I don't see आज क्या है, like it's what 11. Do you see any rumors? Yes. There are window like City has signed Oh, Semenyo. we're not buying anything. भाई तू We're not buying तू चल, anything. पैसे का सीन चल रहा है, ये वो है, मतलब कड़की चल रही है भाई. तू लोन डील करना, तू लोन डील अबे कर. लेट जर्सी क्योंकि गो, लेट अरे जर्सी भाई गो. कोच नहीं है, प्लेयर कहाँ से लाएगा? सिस्टम क्या खेल रहा है? व्हाट इज द विजन? भाई भाई देख, कहाँ से प्लेयर आएगा? विजन क्या तेरे को, एक इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ गेट अ लोन डील. जो एक नॉर्मल मिडफील्डर है भाई, सिस्टम वाला प्लेयर नहीं चाहिए. ये सब रंडी रोना ना, मेरे को ये सिस्टम के हिसाब से ये प्लेयर चाहिए, वो सिस्टम के हिसाब से वो प्लेयर चाहिए. इनको खुद को ही नहीं पता कौन आ रहा है. इंटरिम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे. caretaker भाई manager, they can't decide between that. This is what happens when you sack a manager in fucking Jan. You're not sacking in like March or September, like Jan, जहां पे पूरा सीजन बचा है. तुमको अभी पहले से ही पता है कि कोई प्रूवन मैनेजर नहीं आएगा क्योंकि इट्स fucking middle of the season. Secondly, you have to now appoint a caretaker first. So you can't sign anyone, just like you said.
उसके बाद एक नया मैनेजर ढूंढना भी है, और इट्स अ वर्ल्ड कप थिंग दिस टाइम, ब्रेक में. सो एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू लाइक, तू समझ रहा साइकिल पूरा, लाइक इट्स I क्रोनोलॉजी, समझ रहा आप? it is मैं समझ इसलिए तो मैंने बोला दिस इज ऑल मैन सिटीज प्लान लॉन्ग टर्म प्लान. हाँ, 115 हेडशॉट. charges and rot Man United from within. Liari town. Wawa Dhurandhar, shout out. Like, बट that's what I'm saying. तू खुद, तू The मेरे को more एक we बात बता. talk about. See, हाँ I'm हाँ. asking you, like, take a, you're the owner, you know it's fucked, you don't know the manager, this thing, that thing. But as a normal football fan, you know midfield is our issue, right? Ugarte has been shit. You That's, agree, don't agree, whatever. Casemiro is not of that like age ho gaya, but he's still doing that. He's sort of holding the fort, you can say that. yeah, But yeah, yeah. you need reinforcements, right? Get a loan deal. मैं नहीं बोल रहा हूँ तगड़ा But लेके आओ, that, एक नॉर्मल लेके आओ जो बेसिक फुटबॉल खेले. I'll take 80 IQ. but Duel, that's what I'm saying, Duel, right? You and I talk from a fan perspective who are passionate about this club from sporting perspective and not from economic perspective. Both the owners, the minority stakeholders and the majority stakeholders at this point of time that we have are Fuck, passionate, but only about the money. They do not looks they're like. not passionate about football. So this club is so this is not an embarrassment for us. That's what I'm saying. Every time we come on this call, every time we come on the podcast, every time we come on the episode, we start with this. Oh, this is another embarrassment. This is another low. This is nothing. अभी हमको आदत और हो गई. नीचे जाना है. नहीं अभी आदत तो नहीं है. हमें अभी और हमने जलील होना है. अभी तो हमें और जलील होना है. हमें और इस अरे जिल्लत भाई की रोटी साहब. खानी है, Dwin. नहीं Because तो सही है. because no matter how good a footballing structure you put in, I don't care to Edwin van der Sar को लिया कल को ऊपर बैठाने के लिए, वापस Dan Ashworth को लिया, या you bring in the best people, Juan Laporta को लिया और whoever को लिया. This club will not be able to succeed till the time both the owners, the head, where it starts from, starts thinking about football. They're not thinking about football. As you said, a loan हम्म. deal for a $25 million Ruben Neves would have been amazing at this point of time. Saudi से लेके आया होता, 6 महीने फक, खेला होता अंडर अमोरियम, मचा देता वो. मेहनत तो करता. अमोरिम को वर्क, फायर नहीं करना वर्क रेट, चाहिए. सिर्फ वर्क रेट चाहिए अमोरिम को और फायर कुछ नहीं नहीं करना चाहिए. चाहिए. सीजन के एंड में निकाल देते चलता था, ठीक है. आई वाज नॉट मार्च हैप्पी के विद बाद अमोरिम. आई हैव निकाल. ऑलवेज बीन टेलिंग यू दिस. हाँ. मार्च के बाद निकाल. बट तुमने जो ये किया है ना, दिस इज द बैटल ऑफ ईगो. दिस इज प्योर बिकॉज ही चैलेंज्ड योर अथॉरिटी. तुम मुझे कैसे बोल सकते यू बॉट मी फॉर सो एंड सो. फकिंग. मेरा ईगो हर्ट है, मैं निकालेगा तेरे को. दिस इज द और ये टिपिकल इंडियन स्टार्स बिहेवियर. मेरे घर क्लब पे पे आके हिट मुझे का ही हुआ. बोला. हिट का हुआ क्लब पे, क्योंकि ये सेम चीज, राइट? देख, ये तुम्हारा इंटरनल है. फकिंग डू इट इन प्राइवेट, राइट? फिक्स इट, लाइक वट एवर यू हैव, फिक्स इट, दिस थिंग, दैट थिंग. कीप हिम टिल मार्च अप्रैल तक रखो. तुमको एक आइडिया आएगा. इट गिव्स यू टाइम टू हायर अ न्यू मैनेजर और टू फकिंग सिट डाउन, थिंक okay, we hired a guy with who plays back three, this structure, it's not working. What do we do next? We hire back four, whatever, this thing. These are the managers, these are the lists. Then they start working, right? This is why we were asking for so many years for a structure. This is what an organization, this is how it runs, right? अभी आई नो. तूने जैन में निकाल दिया, अभी कुछ है नहीं. हमको एक मिडफील्डर चाहिए था, वो आ नहीं रहा है. अमोरिम कैसा भी हो, कितना भी गंदा हो, कितने भी गंदे रिजल्ट थे, वी वर सिटिंग ऑन फकिंग फिफ्थ. You can keep arguing that others were playing shit, but we had to do something, right? We had to do something. तब जाके वहां पे आए. मैं नहीं बोल रहा उसको रख, मास तक तो रख भाई. थोड़ा तो गेम निकाल ले.